बिरेस्तारा एसएमई आयपीओ एसएमई खातीर निधी एकठांय करपाची आशादायक सुवात ही कार्यशाळा घडोवन हाडली। उद्देग, वेपार आणि वाणिज्य संचालनालयान नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, गोय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आणि गोय लघु उद्देग संघटना हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा जाली। निधी एकठांय करपाचे आणि ह्या क्षेत्रांत वाडीक चालना दिवपाचे साधन म्हूण ल्हान आणि मध्यम उद्देगांक सुरवातीच्या भौशीक प्रस्तावांच्या संभावतायेविशीं शिक्षण दिवपाचो हेतू हे कार्यशाळेचो आसलो। कार्यशाळेंत उद्देग तज्ञ, उद्देजक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांक एकठांय हाडून स्टॉक एक्सचेंजाचेर एसएमईची वळेरी करपाचे फायदे, आव्हानां आणि वेव्हारीक गजालींचेर चर्चा केली। We are very happy that Goa Chamber of Commerce, other Chamber of Industry Associations, Goa government is supporting us और उनकी मदद से we'll be doing 3 such focused event। हर मीटिंग में हम कोशिश करें कि 40-50 अच्छे कंपनियां एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएं, उनसे इंटरेक्ट करें और उनसे मैंडेट लेके उनको अपने मर्चेंट मेकर से मिलाएं, उनके ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कराएं। हमें लगता है कि गोवा में चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कैशू बिजनेस हो, चाहे एग्रो प्रोडक्ट बिजनेस हो, फूड प्रोसेसिंग को काफी स्कोप है। काफी अच्छी कंपनियां देश के जो ग्रोथ है उसमें साथ दे सकती है। एनएससी इज वेरी मच कमिटेड टू प्रमोट द एसएमई इन गोवा। प्रत्येक जो धंदो करता ताका दिसता की आपण वाडचो म्हणून, ग्रोथ जावची म्हणून, आणि ती ग्रोथ पॉसिबल आसा फक्त आज पब्लीक मार्केट एक्सेस केल्यार। आणि ताका लागून एम्प्लॉईजाकूय मागीर स्टॉक ऑप्शन दिवंक मेळटा, तांकांय धंद्याचे आपले भागीदारी करूंक मेळटा। जे ऑपॉर्च्युनिटीज इमेन्स जाता सामके, आणि पॉसिबिलिटीज इमेन्स जाल्ल्यार आमकां दिसलें की असो जो एक्सपोजर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेळूंक जाय और आमच्या बिझनेसमॅनांक मेळूंक जाय, तो आज म्हाका दिसता दिस इज अ स्टार्टिंग पॉयंट। आमी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सातल्या माध्यमांतल्यान आमी वी विल क्लोजली लायज विथ एनएससी म्हण, तांचे जे कन्सोर्शियम आसा म्हण, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटंट, आणि हो फुडें व्हरपा आनी सरकारा कडेन आमी उलयतले, कारण खुबशा राज्य सरकारांनी इन्सेंटिव्स दिल्ले आसा, ते आमी सरकारा फुडें मांडून हो प्रोसेस एक फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। Having the right people is probably, in my opinion, the biggest challenge. I don't know. It would be pretty high, and that's why the owner is like a one man doing everything very often, because he can't afford to have people of that caliber. And really what's missing is not the ability but the skin in the game. And I think this, what you pointed out over there was pretty much bang on, that this gives you a tool to bring skin in the game for your employees. And according to me, nothing could be bigger, where if you can let go some part of your company, but that makes your people work as if they are the people, they are working for themselves and not for somebody else, I think that would just create so much more value. If you look at the industry landscape in the state of Goa from the government point of view, obviously the key components include the basic availability of land and infrastructure, and also the conditions for ease of doing business. And I can proudly say today, in the last 1 year, with the support of the industry bodies and also the support of the government, we have been able to take very, very significant reforms, both on the ease of doing business front, as well as improving the access to availability of land and improving the infrastructure in all the industrial estates in the state of Goa. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर।